Hello everyone, hope all you are doing fine and well. So, one announcement, this PPT will be available on my Telegram channel and also some other material will be which are useful for your exam. So, please do join the channel GS 24/7 on Telegram. Let's start the today lecture. So, today I'll be discussing about administration and management. I have made slides and it will be helpful for your exam of UPSC and particularly for MPPSC paper 2 part A unit 5. Let's begin with definition of administration. So administration come from word administer which is derived from Latin word which means to serve, सेवा करना. Like I am serving you. ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स, आई एम प्रोवाइडिंग लेक्चर्स, सो आई एम एडमिनिस्ट्रिंग टू माई स्टूडेंट्स. Administer means to manage the affairs of or to look after people. So I am looking after you, I am providing notes. ठीक है. Likewise, administrator like some IAS is providing his service for the district or for state government. So that is administration. L.D. White is a public administration thinker, said that art of administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective. So let's take an example of a district magistrate or collector. Collector with his subordinates like SDM, ADM, Tehsildars, all are working with synergy for the better development or better administration of the district. So they all are doing what? Administration for the betterment of the district. Next, Herbert Simon. In its broadest sense, administration can be defined as activities of groups cooperating to accomplish common goal. So likewise, same example की बात करें तो all of administrative team, whether SDM, district collector, tehsildars, they all are working for common objective, that is development and betterment of district. Then administration is concerned with the what and the how of the government. So the what means कि purpose क्या है, किस चीज के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, जब when we set a goal, हमने गोल बना लिया कि we have to lower down the child mortality in a particular district. So the plan or aim is set. Now with the limited available resources, whole of team will work toward that goal or eradicating child mortality or bringing down the child mortality within the span of time. So the objective is fixed. Objective is that we have to bring down the child mortality, and for that the whole team or administration is done accordingly. So it is a synchronized effort by each and everyone toward a common goal. The how is what all means will be required to achieve the goal, what all resources we have available to achieve that goal, and how those resources and those manpower will be used to accomplish the set goal. So both things are very necessary, by what means we are going to achieve and how we are going to achieve our goal. That is the task of administration. So both are not separable, together they strive to achieve the common goal. Hope I have made point clear. Now let's talk about management. For some thinker or classical thinker, classical were those thinkers who tried to make things best in possible or try to make everything as a science. Okay, so they defined across management or administration as one and the same thing, but later on we will see that there is a thin line of difference between management and administration. So let's talk about management. So according to Cambridge Dictionary, management is the control and organization of something, especially a business and its employee. So according to them, management is more of private entity while administration is more of public entity or related to government.
In simple word, management and administration is concerned with getting things done. See, whether it is private entity or public entity, both are working toward certain goals, and to achieve those goals they have to do certain things. So in simple manner, to attain those things we have to administer or you have to manage certain things. So in simple manner we can say management and administration is getting things done. So there is no clear cut difference between them, but later on we will see there are certain differences. Management is a universal phenomena. Everybody does management. Even we do our management of our timing of for 24 hour, that I have to do that thing in that much time. I have to read that portion in that time. Then I will play. Then I will use phone. So all we do management knowingly and unknowingly in our day-to-day life. So all organization, whether business, political, cultural or social, are involved in management, because it is the management which helps and direct various goals toward a definite purpose. Like आज फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं कि मुझे आज 5 घंटे में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है. सो यू सेट अ गोल, आपने अपना टाइम रखा और आपने टारगेट रखा कि मुझे, ठीक है, आज मौर्यन पूरा कंप्लीट करना है. सो you will try to manage things and time accordingly to achieve the goal of finishing the chapter of Mauryan. ठीक है. So that is you are doing management of your time to complete your lesson. According to W. Taylor, Frederick Wilson Taylor, management is the art of knowing what to do, when to do, and see that it is done in best and cheapest way. So likewise, कि आपको पता है कि आपको 5 घंटे कब मिलेंगे, तो आप उनको स्लॉट बना लोगे कि मुझे लाइक शाम को 8 बजे के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसके बाद 8 से मैं पूरे मेरे 5 घंटे दे पाऊंगा. सो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, तो 8 बजे के बाद करूंगा. व्हाट टू डू, मुझे मौर्य का लेसन पढ़ना है. एंड आप इस तरीके से अपने 5 घंटे मैनेजमेंट करके अपना लेसन कंप्लीट कर सकते हो. देन management is a purposive activity. It is something that direct group effort towards the attainment of certain predetermined goal. Like district वाला example की बात करें तो predetermined goal क्या था, child mortality कम करना, ठीक है. तो उसके लिए पूरी टीम साथ में मिलके बेस्ट अवेलेबल मेथड यूज करके, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कॉमन गोल की तरफ अचीव करने के लिए वो काम करेंगे. सो दैट इज दे ऑल टुगेदर आर डूइंग मैनेजमेंट. लाइकवाइज बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में लाइक कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, प्रोडक्शन टीम, दे ऑल टुगेदर वर्क इन सिनर्जी टू अचीव द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन और प्रॉफिट. ठीक है. It is the process of working with and through others to effectively achieve the goals of organization by efficiently using limited resources. तो गोल क्या था, प्रॉफिट बढ़ाना. तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सारी टीम को साथ में काम करना पड़ेगा, तभी वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमल यूज कर पाएंगे और डिजायर्ड गोल क्या था, वो प्रॉफिट बढ़ाना, उसको अचीव कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर. सो मैनेजमेंट इंक्लूड्स बीइंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सो बीइंग इफेक्टिव मींस डूइंग द अप्रोप्रिएट टास्क, ठीक है, सही टाइम पर सही चीज करना. और बीइंग एफिशिएंट मींस कि आप चीजें तो सही कर रहे हो बट यू आर टेकिंग मोर टाइम और यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, देन यू आर नॉट एफिशिएंट, you are just wasting the resources. Focus on coordinating. Some will write control here. It is not control, it is coordinating. Both of these views were generalist and classical. They try to oversimplify and try to give you a simple version of management. If you apply or do these things, then you are simply doing management. So both of this model lack the human aspect. Next, management and administration are not the same. So, according to Oliver Sheldon, administration defines the goal while management strive towards it. It is like means and ends. तो administration हमको means बताएगा, ठीक है, कि हमें क्या करना है, और end by the action management will try to achieve those means. So, administration is influenced by public opinion and political forces like रोटी कपड़ा मकान. गवर्नमेंट जो है वो रोटी कपड़ा मकान, लोगों को बेसिक नीड्स की जरूरत है,
तो वो दे विल ट्राई टू परसुएट द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि हमें इन रिक्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है, नई स्कीम के साथ आती है, और गवर्नमेंट की उस नई स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है, द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेशन. So they are doing management for the people by providing certain basic needs which are set by government of the day. So administration refers to the act of implementing, running or managing a task, policy or organization, whereas management refers to the search for optimal use of resources to meet specific object. So administration is more process oriented, पैसिव एक्सरसाइज है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं, जबकि मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएट रिजल्ट दिखता है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं. मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट टुडे नीड, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, व्हाइल मैनेजमेंट दे डू प्लानिंग, दे डू पर्सपेक्टिव प्लानिंग कि लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट क्या होगा. ब्रॉडली स्पीकिंग मैनेजमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द डायरेक्टिंग, वो डायरेक्शन देते हैं और मैनेजमेंट क्या है, उन डायरेक्शन को फॉलो करके उसको इंप्लीमेंट करता है. ठीक है. Whereas administration is related to planning and organizing function. Over the passage of time, बहुत thin line सा difference है. As management include planning, अब management क्या हो गया है, with the coming of MBAs and all managerial, they are doing planning as well as doing execution also. So the difference between management and administration become blurred. So I have taken certain basis for comparison or to mention the difference between administration and management. So meaning administration, the process of administering an organization by group of people is known as administration. So certain people are involved and doing planning for the better management or administration is the process of administration. While management, an organized way of managing people and things. ठीक है. So people came together, they have certain goals which they try to achieve it in synchronous manner. So they together working is doing their management. Authority, so administration is done at top level while management is done at lower and middle level. क्योंकि execution जो होता है वो middle और lower level पे होता है, और जो planning होती है, plan बनते हैं, वो top level पे होते हैं. Top CEOs और executive या district level पे बात करें तो DM, SDM मिलके मीटिंग करके पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाते हैं. ठीक है. रोल तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डिसीजन लेता है, प्लान करता है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है. ठीक है. कंसर्न विद, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल इंप्लीमेंटेशन इज डन बाय मैनेजमेंट एट लोअर लेवल. एरियाज ऑफ ऑपरेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वो ओवरव्यू करता है. ठीक है. दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट व्हाइल मैनेजमेंट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्लान जो ऊपर से बन के आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का. ठीक है. फोकस, तो जो लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सब में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सभी का बेनिफिट हो. दैट इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वाइल मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज में उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करके विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज. थैंक यू. प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.